हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे HPCL 2026 की जो रिक्रूटमेंट है मैकेनिकल इंजीनियर जूनियर इंजीनियर उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का आज हम यहाँ पे टॉपिक 14 जॉइनिंग और वेल्डिंग प्रोसेस के कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, मैकेनिकल के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जॉइनिंग और वेल्डिंग प्रोसेस के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है इन वेल्डिंग द हीट अफेक्टेड जोन मींस HAZ इज रीजन वेयर। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मेटल मेल्ट कंप्लीटली, सेकंड ओनली फिलर मेटल एग्जिस्ट, थर्ड माइक्रोस्ट्रक्चर चेंजेस विदाउट मेल्टिंग एंड फोर्थ नो थर्मल अफेक्ट्स ऑकर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड microstructure changes without melting because heat affected zone does not melt but undergoes metallurgical changes due to heat affecting strength and hardness. Next, second, which welding process use non consumable electrode? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट MIG welding, TIG welding, SMAW and submerged arc welding. तो करेक्ट आंसर है सेकंड TIG welding, tungsten inert gas is used tungsten electrode which does not melt and filler is added separately if needed. Next, third, in arc welding arc is struck between. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वर्कपीस एंड गैस, सेकंड इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, थर्ड फ्लक्स एंड इलेक्ट्रोड एंड फोर्थ वायर एंड नोजल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस बिकॉज इलेक्ट्रिक arc form between electrode and base metal that generating heat. Next, fourth, which process is most suitable for joining thin sheet with minimum distortion? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग बिकॉज रेजिस्टेंस वेल्डिंग मीन्स स्पॉट वेल्डिंग मीन्स प्रोड्यूस लोकलाइज हीट मीन्स मिनिमल distortion. Next, fifth, brazing differ from welding because तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट बेस मेटल मेल्ट, सेकंड ओनली फिलर मेटल melts, थर्ड नो हीट इज यूज्ड एंड फोर्थ प्रेशर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ओनली फिलर मेटल melts because in brazing base metal remains solid, that is filler melting greater than 450 degree joint surface. Next, sixth, shouldering is similar to brazing but use. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हायर टेम्परेचर, सेकंड लो मेल्टिंग पॉइंट फिलर, थर्ड प्रेशर एंड फोर्थ आर्क। तो करेक्ट आंसर है सेकंड लोअर melting point filler because soldering use filler below 450 degree Celsius used in electronics. Next, seven, in MIG welding shielding is provided by. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फ्लक्स, slag, inert gas, vacuum. तो करेक्ट आंसर है थर्ड inert gas means MIG. Okay, because inert gas use like argon and helium to protect weld pool. Next, 8, which welding defect is caused by entrapped gas? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट क्रैक, पोरोसिटी, slag inclusion and undercut. तो करेक्ट आंसर है सेकंड पोरोसिटी because gas bubbles trap during solidification form pores. Next, 9, polarity in DC welding effect. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ओनली वोल्टेज, सेकंड हीट डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड ओनली करंट एंड फोर्थ फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड हीट डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज DCEN और DCEP हीट जनरेशन चेंजेस एंड अफेक्ट पेनिट्रेशन एंड एंट्रोड मेल्टिंग। वैसे देखिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेंथ, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू। तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस, तो करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस. ओके, करंट हैज डोमिनेंट इफेक्ट. नेक्स्ट 11, फ्लक्स इन वेल्डिंग इज यूज्ड टू. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज करंट, रिमूव ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हीट एंड फोर्थ इंक्रीज प्रेशर. तो करेक्ट आंसर है सेकंड रिमूव ऑक्सीडाइज बिकॉज flux clean metal surface and prevent oxidation during welding. Next 12, submerged arc welding is characterized by.
तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ओपन आर्क, फ्लक्स कवरिंग आर्क, गैस शील्डिंग एंड नो इलेक्ट्रोड। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड flux covering arc because arc is submerged under granular flux, so high deposition rate and deep penetration. Next 13, which process produce the highest temperature? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर है थर्ड लेजर वेल्डिंग बिकॉज लेजर वेल्डिंग प्रोसेस एक्सट्रीमली हाई लोकलाइज्ड टेम्परेचर दैट इज प्रिसाइज जॉइनिंग। नेक्स्ट 14, वेल्डेबिलिटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स मेनली ऑन। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कलर, केमिकल कंपोजिशन, शेप, डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड केमिकल कंपोजिशन बिकॉज कार्बन कंटेंट्स एंड अलोइंग एलिमेंट्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस वेल्डेबिलिटी। नेक्स्ट 15, इन TIG वेल्डिंग फिलर मेटल इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ऑलवेज रिक्वायर्ड, नेवर यूज्ड, optional and used as electrode. तो correct answer है third optional because TIG can use autogeneous means no filler or with filler depending on requirement. Next 16, which defect occur due to rapid cooling? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट porosity, crack, slag inclusion and undercut. तो correct answer है second crack because rapid cooling induce thermal stress that is cracking. Next 17, in brazing capillary action is responsible for। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हीटिंग, फिलर फ्लो, प्रेशर एप्लीकेशन एंड कूलिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड फिलर फ्लो बिकॉज मोल्टन फिलर फ्लो इनटू जॉइंट बाय कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट 18, रेजिस्टेंस वेल्डिंग डज नॉट रिक्वायर। देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रेशर, करंट, फिलर मेटल एंड इलेक्ट्रोड्स। तो करेक्ट आंसर है थर्ड filler metal because it is a autogeneous process that is no filler metal required. Next 19, which joint is strongest in welding? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट lap joint, butt joint, corner joint, edge joint। तो करेक्ट आंसर है सेकंड butt joint because butt joint provide uniform strength and load distribution. Next 20, in arc welding increasing arc length result in। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज इन वोल्टेज, सेकंड डिक्रीज इन वोल्टेज, नो चेंज एंड इंक्रीज इन करंट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट इंक्रीज इन वोल्टेज बिकॉज आर्क इंक्रीज देन रेजिस्टेंस इंक्रीज देन वोल्टेज रिक्वायर इंक्रीज एंड आर्क बिकम अनस्टेबल। वैसे देखिए मैकेनिकल की PDF अवेलेबल है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर सभी PDFs अवेलेबल है। जिनको भी PDF चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके PDF आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।